वनिता विश्राम स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट द्वारा इंट्रोडक्शन टू डेटा एनालिसिस यूजिंग सॉफ्टवेर विषय पर वन डे वर्कशॉपનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। વનિતા વિશ્રામ સંચાલિત વનિતા વિશ્રામ વુમન્સ યુનિવર્સિટીના સ્કૂલ ઓફ કોમર્સ એન્ડ બિઝનેસ મેનેજમેન્ટમાં ઇન્ચાર્જ ડિરેક્ટર ડોક્ટર અભિલાષા અગ્રવાલના માર્ગદર્શન હેઠળ ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ ડેટા એનાલિસિસ યુઝિંગ સોફ્ટવેર વિષય પર વન ડે વર્કશોપનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। ઉપરોક્ત વર્કશોપના સ્કૂલ ઓફ કોમર્સ એન્ડ બિઝનેસ મેનેજમેન્ટના આંકડાશાસ્ત્ર વિષય પર આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર ડોક્ટર નેહા રાવલે રિસોર્સ પર્સન તરીકે ફરજ બજાવી હતી। આ પ્રોગ્રામમાં વનિતા વિશ્રામ વુમન્સ યુનિવર્સિટીના પ્રોવોસ્ટ ડોક્ટર હરીશ પડ તથા ઇન્ચાર્જ રજિસ્ટ્રાર ડોક્ટર ઇમરાન સુરતી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। ડોક્ટર નેહા રાવલે સ્પીકર તરીકે વિદ્યાર્થીઓને વર્તમાન સમય પર डेटा एनालिस्टનું શું મહત્વ છે એ સમજાવ્યું હતું। આ ઉપરાંત તેમણે ડેટા એનાલિસ્ટની વિવિધ પદ્ધતિઓ સમજાવી અલગ અલગ સોફ્ટવેર પર તેનું પ્રશિક્ષણ આપ્યું હતું। આ વર્કશોપનો મુખ્ય હેતુ કેસ રિસર્ચ દ્વારા સ્ટેટિસ્ટિકલ ટૂલ્સનો વ્યવહારિક જ્ઞાન આપવાનો હતો। આ વર્કશોપમાં સુરતની વિવિધ કોલેજોમાંથી 52 જેટલી વિદ્યાર્થીનીઓએ ભાગ લીધો હતો। नमस्कार। आज हम गुजरात की पहली वुमेन यूनिवर्सिटी वनिता विश्राम वुमेंस यूनिवर्सिटी के यहाँ मौजूद हैं और आज यहाँ एक डेटा एनालिस्ट का एक प्रोग्राम जो स्टूडेंट्स के लिए किया जाता है वो आज वर्कशॉप का एक पूरा वन डे वर्कशॉप ट्रेनिंग का आयोजन किया गया है। क्या है इसमें और कितना बेनिफिट देगा, आज के जो सोशल मीडियाज़ जो हैं कितने उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव साइड्स यहाँ पे बताए जाएंगे, डेटा एनालिसिस कैसे किया जाता है उसके बारे में आज जानकारी दी जाएगी। और आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी सर, आपका नाम? हरीश पाड, प्रोवोस्ट ऑफ वनिता विश्राम वुमेंस यूनिवर्सिटी। सर, एक इनिशिएटिव लिया गया है फॉर द स्टूडेंट्स फॉर दिस बेनिफिट ऑफ डेटा एनालिस्ट, क्या कहेंगे उस पर? If you recall, a couple of decades back, life was very simple. There was not much data. Now we are surrounded with numerous types of data and it's overwhelming. So we need to understand, the students need to understand the relevant data and understand the methodology of how to mine the data, how to harvest the useful information from the data. Otherwise, data is just a piece of information, but unless you mine it properly, there is no knowledge out of it. So students are overwhelmed with the data and data analysis. This workshop is meant to introduce them using software as well as understanding the data first and then using the software, how to best make sense out of the data that we automatically collect these days. And data analysis is very relevant, very important in every sector of our life. Industry sector, even agriculture, government, everywhere you see there is a lot of information and we need a meaningful way of harvesting the information. तो हमारे साथ मौजूद है प्रिंसिपल डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, उनसे हम बात करेंगे। जी मैम, कितना बेनिफिट देता है एक ऐसा इनिशिएटिव लेना जो स्टूडेंट्स के लिए आगे करियर में काफ़ी बेनिफिट रहता है फॉर यूजिंग सोशल मीडिया नाउ डेज? Yes, I must want to say thank you first of all to our provost sir, who has given us the approval and the permission for arranging such a nice workshop which is going to be helpful to the students in their future studies. And also I am thankful to the resource person Dr. Neha Raval, who is a lecturer, assistant professor in our School of Commerce and Business Management of Statistics, in the subject of statistics. And the topic is very relevant, as the sir mentioned, looking to the present scenario also. And we have inculcated many subjects related to research in this curriculum of Vanita Vishram Women's University. So this is our first step to give the knowledge to the students how to do the research, and data is a very important part of research. And I'm happy to state that today 52 students from varied discipline are going to participate in this workshop from different schools of VVWU as well as from VNSGU also. Many students are here today to participate in this workshop. Thank you. जी मैम, आपका नाम? I'm Dr. Neha Raval. I'm working as an assistant professor at School of Commerce and Business Management at Vanita Vishram Women's University. What kind of topics are going to put in the priority base? Students, they are learning statistics from years. But when it comes to using statistics, they have to have working knowledge of this subject. So, of course, we'll not be focusing only on number crunching.
like I mean you are using some software and just get some output. Our focus will be on making them understand the basics of data, and then gradually taking them towards the data analysis and most important interpretation part. So it will be a kind of holistic approach wherein we will start from the roots of data and moving towards its relevant application in different fields. And of course the most important part here would be to solve the problems of different field. Like few years back when we are talking about learning statistics and all, it was just about data, and I mean you are just have to analyze the data that you have in your hand. Now when we are talking about the field of data science, the focus is more on asking right question, right, and solving it through data. So that is what we are trying to do, and this would be, I think, the first step towards that journey. Well, this is the first step. In upcoming days, what kind of planning you are doing for the data analysis? This is the one-day workshop. What are the upcoming next plan? Yeah, I mean data analysis is like an ocean, like jitna bhi karo kam padta hai. So we are starting with very basic and introductory topic, and we will see, depending upon the interest of participant and the relevancy of the topic, we will decide the kind of topic that we would cover in our future workshops and programs. तो जैसे हमने जो ऑर्गेनाइज़र थे उनसे बात की और जाना कि कितना बेनिफिट देता है डेटा एनालिसिस जो वर्कशॉप आज का किया गया है, अब हम स्टूडेंट से बात करेंगे क्या पॉसिबिलिटीज़ हो जाती है, ये इतना इम्पॉर्टेंट देता है। जी, आपका नाम? ईशा अंकावत, सेकेंड ईयर BBA, मैं वनिता विश्राम कॉलेज में हूँ। और हमें डेटा एनालिसिस के लिए बहुत अच्छी मैम ने वर्कशॉप रखी है, उसके अरेंजमेंट्स भी बहुत अच्छे थे। अभी तक के जितना भी इनाग्रेशन हुआ उसके लिए भी हमें बहुत अच्छा लगा। सब ऑनरेबल ट्रस्टीज़ एंड डायरेक्टर्स ऑफ सब थे। नेहा मैम ने भी डेटा एनालिस्ट के बारे में हमको क्लास में भी बताया था। उन्होंने ये भी बोला था कि ये हर फील्ड के लिए, एक पर्टिकुलर फील्ड नहीं कि मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स के लिए यूज़फुल है, बट पर्टिकुलर हर फील्ड के लिए ये बहुत यूज़फुल है। इसलिए हमने डेटा एनालिस्ट के वर्कशॉप के लिए पार्टिसिपेट लिया ताकि हमें भी ये मौका मिले कुछ नया सीखने का। थैंक यू। जी, आपका नाम? आई एम नमीरा कागजी फ्रॉम TY BBA। जैसे कि नेहा मैम ने हमें पहले भी बताया था और अभी भी बताया कि हम डेटा से घिरे हुए हैं। सारे सोशल मीडिया, सारे ऐसे ही जनरल स्टोर्स के लिए भी सारा डेटा ज़रूरी है। और ऐसे भी हमारा TY BBA में विंटर प्रोजेक्ट आ रहा है, उसमें भी हमें डेटा के लिए एनालाइज करना है, उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल है ये। थैंक यू। कितना बेनिफिट देता है डेटा फॉर द अपकमिंग करियर के लिए भी? सारे हमारे जो डेटाज हैं वो सिक्योर होने चाहिए, तो ये वर्कशॉप कितना बेनिफिट देता है? जी, आपका नाम? डिनर शाह, थर्ड ईयर BBA। जैसे मैम ने बोला था कि ये कितना बेनिफिट दे रहा है, तो हम लोग आज देखेंगे, मैम जैसे समझाएंगे कि कितना हो रहा है। और हम लोग का अभी विंटर प्रोजेक्ट भी आ रहा है, उसमें भी डेटा एनालिसिस बहुत यूज़फुल है, तो विल सी। थैंक यू। तो जैसे स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि कितना यूज़फुल रहता है, कितना डेटा अपना सिक्योर रहना कितना ज़रूरी, उसके बारे में जो एनालिस्ट है, जो यहाँ पे डॉक्टर नेहा रावल के द्वारा स्टूडेंट्स को बताया जाएगा।